The Endosulfan Pesticide Prohibition Bill 2011. Mr. P. Rajiv, to move the motion for the consideration of the Endosulfan Pesticide Prohibition Bill 2011. Sir, with your permission, I move the bill, the Endosulfan Pesticide Prohibition Bill 2011. Yes, please. Sir, actually, I am waiting for the last 3 years for moving this bill. It had been introduced in 5th August 2011. Thereafter, several things have happened. The Supreme Court has intervened, several other government initiatives was there. Now, I think now also this is a very serious issue. Our very learned law minister already mentioned the tradition of the House to withdraw the private members' resolution. Sir, we are still practicing the Westminster's practice. Just move the bill, then take the concerns of the member who moved the bill. Thereafter, the normal fate, withdraw the bill. That is the normal procedure. But this is the normal procedure after 1970. I think the Parliament of India have passed 14 private members bill. That is up to 1970. At that time, the governments was very more responsive and took the spirit of the House and 14 bills. In 1952, then the bill Muslim Waqf Board Amendment Bill is passed in 1954. That is first incident. The Lok Sabha, other house passed the bill, that is Muslim Waqf Board Bill. Thereafter, that other house passed 9 bills. But the upper house got the opportunity to pass only 5 bills. Now I think we can utilize this opportunity to pass another bill and reduce the gap in between the upper house and lower house. Our house, Rajya Sabha, in 1956, we passed the first private bill, that is archaeological bill. And 1969, that was the last incident in this house. Holland law minister well aware of that. This house passed Indian Penal Code Amendment Act. The last incident, that is in the other house, 1970, the other house passed a private member bill which gave more jurisdiction to the Supreme Court. That is the tradition up to 1970. But after that, the normal procedure, the member moved the bill, then some discussion, the normal fate withdrawal. Then at the outset, I would like to urge the government, submit before the government, it should revisit the approach to the private member bill. Whether sometimes these bills moved by the opposition members, sometimes from the ruling party, then the government should take the spirit of the bill. If the intent of the bill, the content of the bill, it is intended for the benefit of the nation, benefit of the citizens of the country, then the government should support that bill and government should utilize that opportunity to make a legislation to protect the interest of the citizen and protect the interest of the country. This is my humble submission before the government with regard to the private members bill. Sir, while coming to this bill, this Endosulfan Pesticides Prohibition Bill, our Railway Minister Sadananda Gowdaji is here. He is very close to Kasaragod district, the northern part of Kerala. But this effect of pesticide, he cannot control by the border of the states. I think the citizens of his own constituency also still suffering from the side effects of the pesticide endosulfan. In Kasaragod district,
more than 500 people died by the use of endosulfan. We cannot look to the pictures of the children. I think Pradhananda Gowdaji have seen in the pictures in newspapers, have seen in the visuals in the television. Very disturbing. The children with big heads, the children with autistic, the children with the cerebral palsy issues. More than 10,000 people are suffering from the side effect of endosulfan in Kerala. 500 already, right? The newborn children, after the state of Kerala had banned this use of endosulfan for 1 decade. After that, the newborn children, they come with several neuro diseases. The number of autistic children in Kasaragod district is very high compared to other districts. The number of cerebral palsy CP children is high compared to other districts, not only in Kerala, all over the country. Sir, endosulfan is a highly toxic organochlorine pesticide. After my chemical engineering studies, I got an opportunity to get a training from Hindustan Insecticide Limited. It is one producer of the endosulfan. It is highly toxic organochloric pesticides. It's a brown or cream colored powder which is sprayed or crops by aeroplanes. It is one basic issue for intensifying these casualties. It's there, but there's one issue to intensifying these issues. In several countries, this is a very good pesticide. It is used for cotton, cocoa, cashews, potatoes, cabbage, coffees and soybeans, particularly in the developing countries. This substance kills most types of insects, very powerful insecticides and pests. And farmers like this because it is cheaper than well compared to the price of other pesticides. But this stuff has killed hundreds of agriculture workers, primarily in developing countries. As the exposure of endosulfan in human can impact the central nervous system. There is several scientific studies conducted by Government of Kerala, conducted by other NGO groups, but our Agriculture Ministry always took a stand in favor of the MNCs who produce this endosulfan. In Delhi, I think 2-3 years back, it's a big convention, big seminar to discuss the side effects and other things of endosulfan. It was sponsored by MNCs. That was the practice of the Agriculture Ministry under the Government of India. So Kerala has become the epicenter of this tragedy. This is known as the second Bhopal, these endosulfan issues. The Government and Plantation Corporation of Kerala aerially sprayed endosulfan in an area of nearly 4,700 acres in Kasaragod district of Kerala. 12 villages in Kasaragod district and Hostur Taluk are much affected. Hundreds of deaths and disorders reported. Alarmingly high levels of endosulfan residues have been detected in the blood samples of the people. Still, after imposing the ban before 1 decade, still in the blood samples of the people, it has been find out several residual of endosulfan. Before 2006, government had conducted a survey, and according to that, the total death case reported was 133, and after 2006, it was 353. This is official figure 486. Thereafter, several deaths. The last, before 2 months, one man died because of these side effects of endosulfan. After banning this, every year 3-4 people died. Now itself, sir. The total affected people who are seriously ill is around 3,000, and total affected people is around 10,000. Not only human being, it is observed that the birds and butterflies disappeared. In these 12 villages in Kasaragod district, we cannot find out a butterfly
or a bird, it also disappeared. Fish and frogs in the ponds and streams found die. Widespread ailments and serious health problems were reported since 1996 and popular agitations were there. Thereafter, the government of Kerala banned this in 2002. But sir, as per the Act, Central Insecticide Act 1968, the central government can impose the ban. The state government can impose the ban for temporarily. The central government has the power to ban this. Sir, Stockholm Convention decided to ban endosulfan and 81 countries already banned the use of endosulfan. Sir, Article 21 of the Constitution. Article 21 of the Constitution, that is the fundamental rights to life. That is very important fundamental rights in our country, sir. Sir, then the duty of the government to protect the life of the people. Right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution of India is the most fundamental of all human rights. And as per the Supreme Court verdict, and any decision affecting human life or which may put an individual's life at risk must call for the most anxious scrutiny. Then Supreme Court temporarily bans, as per the public litigation filed by Democratic Youth Federation of India, the Apex Court banned in an interim order the usage of the endosulfan. But the position taken by the Agriculture Ministry still is in favor of endosulfan. They are not ready to impose it. And other places, 2-3 days back, I read a newspaper comment by one MP from Karnataka. Karnataka also more than 2,500 people still affected. I think from the ruling party, one MP, Shankarji, one MP from ruling party from Karnataka. She also demanded ban of endosulfan. Sadananda Gowdaji also, I think, supports this request. Very humanitarian issue. Not only Kerala, Karnataka, everywhere, in Tamil Nadu also. We are using all these vegetables. We don't know what pesticides are using. Most of the vegetables, this farmer is still using this endosulfan. That is the truth. Not only in Kerala or Karnataka. 81 countries already banned. Why not we? That is the main question. So I move this bill, endosulfan pesticide prohibition bill 2000. I would not like to take more time. Several members want to participate in the discussion, sir. My demand, the clause 4 of this bill, there's prohibition on use of endosulfan. The use of endosulfan pesticides and its alternatives. Sometimes they have used the same chemical with another name. Then use of this chemical, it should be banned. That is one major demand of this bill, sir. And import of endosulfan and its alternative from other countries shall be prohibited. This is the major demand of this section 4 of this bill deals with that, sir. Then what about the victims? Section 5 deals with that. Relief measures for persons affected by endosulfan pesticides. National Human Rights Commission. National Human Rights Commission ordered to give 5 lakh rupees for the families of the deceased and bedridden patient's family. 5 lakhs rupees National Human Rights Commission ordered to give as compensation 5 lakh rupees, sir. Now, my request by this bill, any patient suffering from the adverse effect of endosulfan and his family shall be considered as a BPL family. And the financial assistance, 4,000 per month to the family of any person affected by ill effects of endosulfan pesticides, and the family shall continue to receive financial assistance of rupees 2,000 per month for a period of another 5 years after the death of the affected person. That is 5.2 demand, sir.
this affected person needs assistance, then this bill, you have a provision to give some financial assistance of rupees 2,000 per month to the person who assists and take care of the person affected by endosulfan pesticide. And the one important demand, that is constitute a tribunal. A tribunal shall consist of 3 members who shall decide on matters referred to it by the appropriate government relating to endosulfan pesticides. And 1 member of the tribunal shall be a retired judge of the High Court of the state, whether Kerala or Karnataka or Tamil Nadu, the High Court judge of the state, and 2 members shall be experts in public health and agriculture activities and practices respectively. And sir, the tribunal shall appoint a person as it deems fit, processing some technician and other qualifications, that appointment of inspectors. They should have the right to inspect, to enter, search, seize, inspect documents necessary to carry out the objective of this act. At all reasonable times and with such assistance, if any, as he consider necessary, any premises in which he has reason to believe that an offence under this act, sir. Sir, and the central government to provide funds to give compensation and other financial liabilities while implementing the provisions of this bill, constituting the tribunal and giving other facilities to implement the provisions of this bill, sir. Sir, then this is the most important bill. I request the government take it as a humanitarian consideration, not in a technical viewpoint. Very humanitarian issue. If the government still believe in Article 21, you should take necessary steps to ban legally. There is a ban is there, but legally, as per the law, the use of pesticides, they demand to for 11 years, state by state, but 81 countries already banned this endosulfan, usage of endosulfan, and request the government to consider it as a humanitarian bill and give a maximum compensation for this. I request the government to support this bill, and I request the House to support this bill for getting more benefits to the victims of endosulfan and protect the environment and ensure the human rights of the coming generation, not only this generation, coming generation. I request the House. Thank you, sir. Thank you. Mr. Vijay Dadda. धन्यवाद चेयरमैन साहब। सर्वप्रथम मैं पी राजीव जी को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने इंडोसल्फान पेस्टिसाइड बिल लाकर एक महान कार्य किया है। मैं उस प्रदेश से आता हूं जहां पर किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है देश में, और जिन किसानों ने आत्महत्या की है उन्होंने इंडोसल्फान का सबसे ज्यादा सेवन किया है। वो विदर्भ, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ में पंजाब में भी। इंडोसल्फान ये करीब करीब 63 कंट्रीज के अंदर दुनिया में हजार्डस ह्यूमन बीइंग कंजम्पशन के लिए और एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है करके बैन किया गया हुआ है। और उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में आज भी ये हम लोग सबसे ज्यादा इसका उपयोग कर रहे हैं, और सिर्फ उपयोग ही नहीं कर रहे तो हम उसको प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। इसका इतना एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है कि जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मर रहे हैं, उसका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट हो रहा है, और इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसा कि मेरे पहले राजीव जी ने कहा कि अगर सचमुच हम लोग आर्टिकल 21 में विश्वास करते हैं तो इसको ह्यूमैनिटी ग्राउंड से हमें देखना चाहिए।
सबसे दुखद घटना यह है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन के लगातार प्रेसिडेंस के बावजूद भी हम लोग इसका समर्थन कर रहे हैं कि इसको बैन नहीं करना चाहिए, उसके हम लोग पैरवी कर रहे हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि इस देश के अंदर विदर्भ, मराठवाड़ा जो कि महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ऐसे अनेक राज्यों में किसानों की इसके अंदर मृत्यु हुई है। आत्महत्या हुई है और इंडोसल्फान के सेवन से सिर्फ लोग मरे नहीं है, तो उसके जो परिणाम हो रहे हैं उसके कारण से नर्वस सिस्टम, किडनी का फेलियर होना, इम्यून सिस्टम सिलेबल पैलेस, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इपिलेप्सी बच्चों में और कैंसर जैसी बीमारियां भी इसमें हो रही है। हजारों लोग मर रहे हैं और उसके बावजूद भी सरकार इसको मानवता के दृष्टिकोण से विचार नहीं कर रही है। किसान भी मर रहे हैं और एनवायरनमेंट भी मर रहा है हमारा। और उसके बावजूद भी जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको बैन किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिशन करते हुए भारत सरकार ने कहा कि हम फेजेस में इसको हटाएंगे। और जो दुनिया की इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको परस्यू कर रही थी कि इसको बैन किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ में हमारी सरकार लॉबी कर रही थी। ये और दुखद बात है। न जाने आज तक कितने जान माल की हानि हुई होगी। पेस्टिसाइड की वजह से जमीन भी बंजर हो रही है और जो इसके कारण से, इंडोसल्फान के कारण से नई और पुरानी पीढ़ी के ऊपर कितना असर हो रहा होगा और आगे कितना असर होगा। हम लोग सब्जियां खाते हैं, वो हम लोग सब्जी नहीं, सब्जी है, फ्रूट्स है, अनाज है, उसके माध्यम से हम लोग जहर उनको परोस रहे हैं। न जाने इसके कारण से किन किन बीमारियों का, जैसा कि मैंने उल्लेख किया था, वो अलग अलग जगहों पे हो रही है। और जिसके कारण से भारत सरकार के और राज्यों के हेल्थ डिपार्टमेंट पे भी इसका असर हो रहा है। कभी हम लोगों ने इसका इंपैक्ट असेसमेंट करने का प्रयास किया है कि इन बीमारियों के कारण से हमारे बजट पे उसका कितना इंपैक्ट हो रहा है? क्या कभी हम लोगों ने इस बात का प्रयास किया है कि इस पेस्टिसाइड की वजह से आज तक कितने लोग मरे हैं? क्या हमने कभी ये प्रयास किया है कि इसके वजह से कितने बच्चे और गरोदर माताएं, प्रेग्नेंट माताएं पे क्या इंपैक्ट हुआ है? आने वाली हमारी पीढ़ी पर उसका क्या असर हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कोई इसकी ओर सीरियसली देख रहा है। हमें इस बात की खुशी है कि हमारा देश कल तक अनाज के लिए आत्मनिर्भर था और लोगों पे। आज हमारा देश दुनिया के अंदर राइस के अंदर सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। करीब करीब हम लोग एक्सपोर्ट के माध्यम से 3-3.25 लाख करोड़ से ऊपर हम लोग धन अर्जित कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद भी मैं आपकी तरफ ये ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसको ह्यूमैनिटी ग्राउंड से देखा जाना चाहिए और अल्टरनेट क्या है, वो अल्टरनेट का विचार करना चाहिए। ऑर्गेनिक जो खेती हो रही है उसको हमने बढ़ावा देना चाहिए। दुनिया भर के अंदर लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, न जाने हम क्यों इसका उपयोग नहीं कर रहे। और इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि वो इस बिल का तो समर्थन करें और साथ साथ में इंडोसल्फान को देश में बैन करें। जिस प्रकार से विश्व के करीब करीब 60-70 देशों ने उसका समर्थन किया है,
जो लोग इस कारण सफर कर रहे हैं उन्हें कॉम्पेंसेशन दे, जो किसान मजदूर इस कारण से जिनकी जीव की और जीवित की हानि हुई है उसका असेसमेंट करके सरकार उसका डाटा बैंक बनाए और उन लोगों को मुआवजा दे। उसी प्रकार से जो लोग सफर कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है मगर उनके परिवार के अंदर किसान के घर में जो गरीब किसान है, मार्जिनल किसान है, उन लोगों को उनको सरकार में नौकरी देने की तथा उनको एक मोटी राशि देने की व्यवस्था करनी चाहिए। उनके जो बच्चे उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, उनको फाइनेंशियल मदद करें। इसके खाने से बच्चों पर क्या असर हो रहा है इसकी भी इंडिपेंडेंट जांच की जानी चाहिए और जांच करके उसका भी डाटा हम लोगों ने बनाना चाहिए। इसी के साथ में मैं एक आखिरी में और कहना चाहूंगा कि कृपा करके फिर एक बार उस बात के ऊपर रिपीट करना चाहूंगा, आर्टिकल 21 जिसके अंदर ह्यूमन राइट का विचार किया गया, कृपा करके हम लोग उसके ओर ध्यान दें और ये जो बिल यहाँ पर पी राजीव जी के कारण यहाँ पर आया है उसका सरकार समर्थन करे। मैं उसका समर्थन करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। Thank you. Mr. Trichy Siva. Thank you, Mr. Vice Chairman. I rise to support the private member bill moved by my colleague Mr. Rajiv with a social concern. So the endosulfan, which has been banned in 63 countries, considering the hazardous effect on human beings and environment, is to be banned in India also. Sir, while introducing the bill, Mr. Rajiv told very elaborately the impact it has created in the state of Kerala, how many people have died and how many people are still under treatment. What happened in Baroda and what happened in some other places due to atomic leakage, the same thing is happening by way of these pesticides. Of course, pesticides are necessary. We cannot dispense of them in this present situation. But at the same time, what are the consequences? We use pesticides to kill the worms, germs or pests on the crops which we grow only to make the people live happily or peacefully or healthily. Whereas the pesticides which we use create a hazardous situation and kills the lives of people, I think it has to be considered very, very seriously. So I would like to cite you only one thing. I think many of us know about a bird called robin, which we have seen in some of the advertisements also. It was a very nice bird like our sparrow, which is becoming an extinct species in our country now. We know the small little sparrow which comes and sits and flies very fast. Nowadays it's very hard to see. What happened to them? Nobody is worried about it. We are worried about the bigger animals like lion or tiger that they are extinct, not about the small sparrows which are so cute and which are so nice to see. So also the robin bird is something very nice to see that was very much abundantly present in US. So once there was a new worm which affected all the trees on the leaves. So what the government did was, in order to kill all the worms, they sprayed some pesticide from a helicopter across the country. Of course the worms died. But the small little, the pesticide, the worms which used to live upon eating those leaves, they ate those leaves and they died and fell. And the robin birds which used to prey upon these worms, they ate that prey and totally the robin bird became an extinct species. If that applies to a robin bird, why will not it apply to human beings? If you want to save the crops, find some alternate. If you are going to suffer from by way of in future, of course, coal is depleting, and we are going to suffer a lot in future. How many years you are going to sustain with the available petroleum products under the earth? You have to find some alternate. A time will come when whatever we are using will be out of use, and man has to resort something. Necessity is the mother of invention. And likewise, when you are using a pesticide in order to save the crops from the pest, you have to consider the human lives more precious.
So I think the government of India has appealed in the court of law that this ban should be only after 11 years. But within those 11 years, how many lives we are going to lose? So it is something to be considered very seriously, and Mr. Rajiv has taken this issue, which the government should have taken. See, ours is a very thick populated country, and in 2020 we are going to surpass even China, and when they are 3 times bigger than India, India is having 3 times more than Chinese population in 1 square kilometers. China is 9 lakh and odd square kilometer, whereas we are only 3 lakh and odd. Only 131 people live there, here 460 people live in 1 square kilometer. So when the people start, the population starts increasing, we should not find any other way to bring it down. Sir, the foremost necessity of the government is to protect the people, not only by giving them medical assistance and all, at the same time to avoid such things which happen by way of such hazardous things which could be prevented by enacting a law. So already the Kerala government has banned that, and across the world 63 countries have banned. Sir, we have to set a precedent. In 40 countries the death penalty has been abolished, whereas India has not. See, we say we are an advanced country, we are a developed country, but when our activities come into action, when we consider them, many of the things we are in the backward condition. Likewise, Government of India has to consider very seriously, and they have to ban this endosulfan in keeping in view, giving priority to the human lives, which is very, very precious. See, it's very, very hard. If nowadays so many diseases are, I got a mail today which says what are the food materials which we eat are causing cancer. Everyone is saying the source of that disease coming is not known. So also the curing is also not known. When the government is spending crores of rupees for buildings, they don't spend even 150 crore or 100 crores for R&D. If they spend it on R&D, I think they can invent so many medicines. Likewise, the non-organic foods. Sir, there was one scientist, agriculture scientist in our place who is no more, Mr. Namalwar, who said, kindly, if the pesticides kills the pest, imagine what the man will happen to the man who eats that same pesticide applied crop. And he gave a substitute. Of course, he said, even my colleague said, yes, endosulfan is very dangerous, but at the same time, what to do with the pest? But he gave some substitute. He gave so many ideas what to do with that. It won't harm the human at all, but at the same time, it will suppress the pest from spreading. But those people have not been recognized by this country, because our country boasts much by itself, but it never recognizes people who have knowledge or give some innovative ideas. Sir, it's still the views which he has expressed are on books. They could be implemented. And across the country, there are so many people who are giving some alternates to such things. So taking them into consideration, if endosulfan is a must which cannot be avoided in killing pests while we have to nurture agriculture, find some alternate or substitute which are abundantly available. If the minister so wishes, we can present to him what Mr. Namalwar has given as this organic and how to avoid such hazardous things, sir. With these words, sir, I support the bill introduced by Mr. Rajiv, and the government has to consider very seriously and take steps to ban endosulfan as like other countries. Thank you very much. Thank you. Shri Manshu K.L. Mandavia. यस सर, जो पी राजीव जी एंडोसल्फान नाशक जीवाणु प्रतिवेद विधेयक 2011 लेके आए हैं, उनके पर मेरा विचार रखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। सर, यहाँ जो विषय रखा गया है सही है कि हमारे यहाँ केमिकल पेस्टिसाइड का यूज करते हुए हमारी जमीन संपदा को नुकसान हो रहा है, हमारा वायुमंडल को भी नुकसान हो रहा है, और वो नुकसान की वजह से उसका विकल्प के बारे में भी बात हो रही है और सोचा भी जा रहा है, और वैज्ञानिक दृष्टि से उनका उपाय के बारे में भी बहुत प्रयास हो रहे हैं। केवल नहीं
एंडोसल्फान, लेकिन साइपरमेथ्रिन और जो पेस्टिसाइड है, ये सभी पेस्टिसाइड ऐसी है कि जो कुल मिला के भू संपदा को नुकसान करती है और जमीन को नुकसान करती है। तो उनकी असर जो उनके पर होने वाले फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स सब में उसकी इफेक्ट आती है और उनके इफेक्ट के आधार पर ये हमारा व्यक्तिगत जीवन को भी नुकसान करता है। वो भी सच है कि सालों पहले जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, गांव में सरकारी मशीनरी आती थी और पिक्चर दिखाती थी कि केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग करो और कृषि पैदावार बढ़ाओ। उस वक्त वैसी ही घटना होती थी और अभी वो समय वो यहां तक आगे पहुंचा है कि केमिकल पेस्टिसाइड है उसका उपयोग करो, बंद करो और बायो पेस्टिसाइड की तरफ आगे बढ़ो। एक समय था जब मैं वेटनरी में पढ़ाई करता था, उस वक्त हमारा प्रोफेसर हमको पढ़ाया करता था कि क्रॉस ब्रीड का उपयोग करो और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाओ। समय यहां तक आ पहुंचा कि ओरिजिन एनिमल को डेवलप करो, ओरिजिनल ब्रीड को बचाए रखो और मिल्क प्रोडक्शन सस्टेन करो। वैसा ही केमिकल फर्टिलाइजर में था। 10, 20, 25 साल के पहले गांव-गांव में जाके कहता था कि आपकी फसल बढ़ाना है, कृषि पैदावार बढ़ाना है तो केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करो, और आज कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उपयोग करो और कृषि पैदावार बढ़ाओ। कुल मिला के सालों पहले जो हमने हमारी जमीन संपदा को नुकसान किया, हमने ही हमारी जमीन संपदा को, हमारा वायुमंडल को जो नुकसान किया है, उसका परिणाम आज हम सब लोग भुगत रहे हैं। और इसलिए ये जो एंडोसल्फान है, ऐसी जो दवाएं है, ऐसी जो पेस्टिसाइड है, वो जीवन पे नुकसान करती है, खाद में भी नुकसान करती है, जमीनों को भी नुकसान करती है, लेकिन उनका अनेक विकल्प थे उस वक्त भी, पहले भी। जो हमारा पारंपरिक साइंस है, हमारे पास ट्रेडिशनल जो लाइफ सिस्टम है, उनके आधार पर जो हमारा साइंस आगे बढ़ाया होता, और उनके आधार पर हमने अभी यहाँ बात हुई कि इतने लोगों, किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। सही है, किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है, हमारे देश के लिए वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सारा देश 70% हमारे देश की आबादी जो खेत पर नपती है, और हमारे जो किसान है उनकी वो दयनीय स्थिति आके यहाँ क्यों पहुंची, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? कैसी हमारी सरकार की नीतियों बनी कि जो नीतियों के आधार पर हमारा किसान की वो स्थिति आके खड़ी रही? उसको उस वक्त, आज से 30-40 वर्ष पहले जो सही तरह से हमारा साइंस, हमारे टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया होता, तो मुझे लगता है कि वायुमंडल, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता, हमारी खेती की आमदनी भी वैसी ही रहती, और हमारा किसान सालों से, एक किसान अभी खेती नुकसान करने लगी है, ये समझ खेती क्या हिंदुस्तान में अभी भी 40-50 साल से ही हो रही है। वर्षों से, सालों से हमारे देश में खेती ही हमारा व्यवसाय था, खेती ही हमारा धंधा था, और उनके पर हम सब लोग नपते थे, हमारा जीवन निर्वाह चलता था, और वो ही खेती है, वही कृषि है, उनके ऊपर हमारा जीवन भी नपता था, हमारा परिवार का पालन भी उससे होता था, हमारा परिवार में आने वाला सभी प्रसंगों भी उससे पार होता था, लेकिन भी किसानों को कभी सुसाइड नहीं करना पड़ा था। लेकिन वो स्थिति यहाँ आकर इसलिए पहुंची है कि हमारी जो खेती में संशोधन हुए, हमने शॉर्टकट ले लिया, शॉर्टकट के आधार पर हमने आगे बढ़ने की कोशिश की, और ये शॉर्टकट हमें यहाँ ले आए, जैसे हमारा जीवन, उनके लिए जीवन जीने के लिए, और हमारा अच्छी तरह से हमारा स्वास्थ्य पर उनकी असर आके पहुंची। इसलिए ये जो घटनाक्रम चला है, उसका वैकल्पिक कारण भी, वैकल्पिक रचनाएं भी थी, वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी थी। एक केमिकल पेस्टिसाइड आया, तो हमारे केमिकल पेस्टिसाइड हमारे कृषि में लगाया गया, उससे नुकसान हुआ, इससे चिड़िया मर गई, उससे तितली मर गई, उससे वर्म मर गए, तो ये सब मर गए इसलिए जो उसका परंपरागत उनका नाश करने की सिस्टम थी, तितली होती थी, चिड़िया होती थी, तो जो यल होती थी उसको खा जाती थी और उसको मार देती थी, ये पारंपरिक उनकी साइकिल चलती थी। तो फिर वो साइंस यहाँ जल्दबाजी में हमने पेस्टिसाइड ले लिया। सही हुआ कि तुरंत उससे शायद यल तो मर गई, लेकिन उसकी जो
हमारा जीवन पर असर हुई, कुल मिला के उनका भूमि पर जो असर हुई, ये जो हमारा कृषि थी उनके पर असर हुई। आज समय वो आके वहां खड़ा रह गया कि हमारा जो केमिकल फर्टिलाइजर जमीन में रखते रखते ये हमारी जमीन किसान को उत्पादन नहीं दे रही है। वही पौधे, वही कृषि हमको इतनी फसल नहीं दे रही है, उसका बैक रिवर्स चला। इसलिए कुल मिला के जो हमारा कृषि में रिसर्च हुआ, कृषि आगे बढ़ी, मेरा स्पष्ट मानना है कि हमारा जो ट्रेडिशनल साइंस को ध्यान में रखते हुए, ट्रेडिशनल साइंस को उजागर करते हुए जो आगे बढ़ी होती, तो अभी जो समय आया वो समय नहीं आया होता। और अभी भी बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड का उपयोग देश में बढ़ रहा है। हमारा केमिकल फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट ने भी 10% उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उपयोग करने के लिए प्रावधान भी रखे हैं। और जब मैं बजट पढ़ रहा था, बजट में भी मैं सरकार को भी अभिनंदन देना चाहता हूं कि सरकार ने तय किया कि हमारे देश में कुल मिला के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ज्यादातर उपयोग हो, ऑर्गेनिक फसल हमारे देश में बढ़े और उनका मार्केट के लिए कुछ विचार किया जाए और देश में ऑर्गेनिक चीज वस्तु, ऑर्गेनिक खेत पैदावार बढ़े और वो खेत पैदावार से हमारा निर्वाह चले। वो ऑर्गेनिक हमारा फ्रूट वेजिटेबल मार्केट में आए, हमारा किसान को उनके लिए प्रोत्साहित किया जाए और ऐसा प्रोत्साहित करके हम ऐसा वैसी स्थिति से बाहर आ सकते हैं। और जो हमारा सदस्य वो बिल लेके आए हैं, वो बिल कुल मिला के हमारा जीवन के लिए, भू वायुमंडल का सुदृढ़ीकरण के लिए और भविष्य की कृषि को बचाने के लिए ऐसा जो केमिकल पेस्टिसाइड है उनका विकल्प में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड उसका ज्यादातर उपयोग करने की व्यवस्था सरकार बनाए और वैसी नीति के आधार पर भविष्य में हमारी कृषि पैदावार सुनिश्चित करे और देश को कृषि में स्वनिर्भर और आगे बढ़ाए, ऐसा मैं विचार रख के मेरी बात पूर्ण करता हूँ। Thank you very much, Mr. Mandavia. Oh, Mr. Tyagi. धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं श्री पी राजीव के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो इन्होंने सुझाव दिया है। सर, आज देश के लगभग सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है, यूएनएससी की रिपोर्ट के आधार पर जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसमें भारत 135वें स्थान पर है, यानी कि बांग्लादेश और नेपाल भी इससे बेहतर स्थिति में है और युगांडा, नाइजीरिया, निकारागुआ उनसे थोड़ा सा बेहतर हिंदुस्तान के बारे में बताया गया है। अभी मेरे साथी इस पर चिंता व्यक्त कर रहे थे। पिछले साल की एक घटना है, भाई रामविलास जी बैठे हैं, बिहार में सारण जिले में कुछ बच्चे मिड डे मील में विषाक्त दवाई या पेस्टिसाइड के मिलावट की वजह से मर गए थे। तो इसी सदन में मैंने पिछले साल ये सवाल उठाया था और जानकारी चाहिए थी। तो बाद में जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसमें पाया गया कि जो पेस्टिसाइड खाने में इस्तेमाल किया गया था वो भारत में बैन था। भारत में प्रतिबंधित होने के बावजूद भी वो पटना के पास के सारण जिले में पहुंच गया, जिससे कई बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पिछले सदन में सर मैंने एक सवाल किया था कि देश के अंदर कितनी दवाइयां ऐसी हैं जो विदेश में बैन है लेकिन हिंदुस्तान में इस्तेमाल हो रही है। माननीय रसायन मंत्री जी के विभाग से भी जुड़ा हुआ प्रश्न जिसका जवाब मुझे मिला था पिछले सप्ताह, लगभग 130 दवाई इंटरनेशनली बैन है और उसमें से 70 जो है हिंदुस्तान में इस्तेमाल आज की तारीख में भी हो रही है, जिसका जिक्र अभी हमारे साथी
मिस्टर राजीव ने किया है, तो भारत ऐसी बहुत सारी चीजों की प्रयोगशाला बन गया। यहां पर पशुओं पर भी प्रयोग हो रहे हैं कि ये अमुक दवाई जो यूरोप में या अमेरिका में इस्तेमाल होती है, उसको यहां के पशुओं पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आदमियों पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं, फसल पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं, सब्जी पे इस्तेमाल हो रहे हैं, पक्षियों पे हो रहे हैं, खेती पर हो रहे हैं। और एक तरीके से ये पूरी दुनिया के ऐसे प्रयोगों की प्रयोगशाला बन गया। ऐसा ही एंडोसल्फान जो जिसका जिक्र हमारे साथी अभी मिस्टर राजीव ने किया, इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो चुका है। और कृषि मंत्री महोदय जानते हैं, जो एक्सपायर हो गए इंसेक्टिसाइड, जो पेस्टिसाइड जिनकी उम्र गुजर गई है, वो भी हमारे यहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसकी वजह से जान की, माल की, फसल की भी बर्बादी हो रही है। अब ये 81 मुल्कों में अगर बैन है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यहां क्यों इस्तेमाल हो रहा है। मैं पिछले सप्ताह के एक समाचार पत्र में पढ़ा कि भिंडी खाने से 51 आदमी बीमार पड़ गए। भिंडी के अंदर, जब भिंडी को बनाते हैं, मैं किसान परिवार से हूं, तो उसमें इतना पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल होता है। माननीय मंत्री महोदय मेरे पड़ोसी हैं, भिंडी से ज्यादा इंसेक्टिसाइड मारने का कहीं इस्तेमाल नहीं होता। तो भिंडी के अंदर तक चला गया वो, और 51 आदमी भिंडी खाने से बीमार हो गए। हमने पहले सुना था कि कोई जहरीली शराब पीने से मर गया या कोई जहरी चीज खाने से मर गया। अब यहां जो फसल है वो भी ऐसी पैदा हो रही है मान्यवर, उसके खाने से भी लोग बीमार पड़ गए हैं। तो मेरा ये निवेदन आपसे ये है कि इतने मुल्कों में बैन चीज है, केरला में, पंजाब में, कर्नाटका में, आंध्रा में, आसाम में इसका ऊंचे पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि बगैर किसी समय को खराब किए, हमारे आदरणीय मंत्री महोदय बैठे हुए कलराज जी यहां से जीत करके आते हैं। हर साल बच्चों के दिमागी बुखार की बीमारी होती है, हर साल। आप चले गए चांद पर, लेकिन दुनिया की कोई भी इन्फेक्शस डिजीज ऐसी नहीं है जो यहां पे नहीं है। आप गलत कह रहे हैं, चेचक हर साल निकलती है, हैजा हर साल होता है, मलेरिया हर साल होता है, आंखों की बीमारियां हर साल होती हैं। और हम अपनी शेखियां बखारने में कि हम दैट वी आर द मोस्ट सिविलाइज्ड नेशन एंड द मोस्ट सिविलाइज्ड कंट्री। मुजफ्फरपुर में भी भाई रामविलास जी गवाह हैं, पता नहीं कितने बच्चे, मैं इनका वक्तव्य पढ़ रहा था, कितने बच्चे वहां दिमागी बुखार से मर गए। तो ये जो इस तरह की बीमारियां हैं, ये मैन मेड बीमारियां हैं, भगवान की या प्रकृति की बनाई बीमारियां नहीं। हमने ऐसा अपने आसपास बना लिया। और मुझे प्रसन्नता है, मुझे कोई तारीफ करने में दिक्कत नहीं कि प्रधानमंत्री ने जो पूर्वांचल के राज्य हैं, जो ईस्टर्न इंडिया है, उसमें ऑर्गेनिक खेती के लिए उन्होंने कहा है कि वहां होना चाहिए। वो कभी गए होंगे। इसलिए इस तरह की चीजों से आप जो है बचने का प्रयास करें। चूंकि ये कोई यहां की अकेले केरला की जिसका जिक्र मिस्टर पी राजीव ने किया, वहां का नहीं है बीमारी। आत्महत्या करने के मामले में भी हमारे पश्चिम में भी इसी का इस्तेमाल होता है। सब सल्फर खा के, अमुक का बच्चा है, बच्ची कोई मर गया, ये वो इंडोसल्फान और क्या चाहिए। और अब मेरा इन चीजों पर नए तरीके से रिव्यू करने का भी वक्त आ गया। 60-67 साल हो गए। मैं तो रिव्यू करना चाहता हूं आपके प्राइवेट मेंबर बिल के जो समय है, ये भी बहुत गलत है। जो माननीय सदस्य हैं इस हाउस के, उनके पास एक ही औजार है, वो है प्राइवेट मेंबर बिल। और ये बिल जो है कई बार कानून बन चुका है, इस हाउस में भी और उस हाउस में भी। आपने फ्राइडे का दिन रखा है, आज तो इत्तेफाक से अलविदा जुमा भी है मुसलमान भाइयों का, कितनी उपस्थिति है। इसलिए मेरा निवेदन है, जो जागरूक सदस्य है सदन के, और मैंने सर एक दिया हुआ भी है, मैं रूल कमेटी का मेंबर हूं, कि फ्राइडे को 2 या 3 या 4 बजे के बाद इस बिल को ना रखा जाए, चूंकि इसमें उपस्थिति इतनी कम होती है और ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है माननीय सदस्यों के पास।
इसका समय भी बदला जाए। मैं अपनी टोटल जो मेरा वक्तव्य है वो पी राजीव के उस प्रस्ताव के साथ है, माननीय सदस्य के साथ, और मैं चाहूंगा कि कृषि मंत्री भी दोनों, और रसायन के और उद्योग के मंत्री भी यहां पर बैठे हुए हैं, उनका भी मैंने घटना को जिक्र किया। इन सारे सवालों पर नई तरीके से सोचें कि क्यों ऐसा वातावरण जहरीली दवाइयों के जरिए, जिसमें पक्षी, अब चील दिखाई नहीं देती मिश्रा जी, चील देखे, बाज देखे पता नहीं कितने साल हो गए हम लोगों को, चूंकि सारा वातावरण आपने ऐसा बना दिया, ये पक्षी मरने लगे और ये प्रजातियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और इंसान के भी जिस्म में जो 1000 तरह की बीमारियां हैं, मैंने पिछले दिनों पढ़ा पूरे गांव में खुजली हो गई है, पूरे गांव में। अब कल्पना करो कि पूरा गांव जो खुजा रहा है, जहां भी जा रहा है मीटिंग में, खुजली। पता लगा कि एक ही तालाब था जिसमें समूचा गांव नहाता था, तो एक आदमी को हुई होगी, सबको होगी। तो इस तरह के प्रयोग भारत जैसे विकसित देश में ना हो। कृषि मंत्रालय को, रसायन मंत्रालय को नए तरीके से इस पर विस्तार से विचार करना चाहिए। मैं श्री पी राजीव के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। Thank you, Mr. Tyagi. Thank you. Mr. Navneet Krishnan. Thank you, Honorable Chairman, and honorable members of this august body, and the observers. I support the bill now introduced by my brother, Mr. Rajiv. In the endosulfan killer pesticide must be banned. There cannot be any second opinion, because what had happened in Kasaragod is available in the internet. Now, the Kerala government banned the endosulfan, and because the Plantation Corporation Limited, owned by the Kerala government, had sprayed the endosulfan in the cashew plantations and thereby caused heavy damage to the people, those who are living in and around that area, and then they are still suffering from that because of the ill effects of this endosulfan. Now, after going through the classes of this bill, I am of the opinion, humble opinion, that the manufacturing, storing, selling, or in whatever manner, whatever form it is available, kept anywhere, it must be made punishable. The manufacturing is, though it is mentioned in section 4, section 4 I am reading. On and from such day as the central government may appoint in this behalf, the use of endosulfan pesticides and its alternatives in agricultural related activities, and the import of endosulfan and its alternatives from other countries shall be prohibited. It must be amended subject to correction and approval by this august body. The manufacturing, selling, storing, or in whatever manner the endosulfan is dealt with is prohibited. It must be prohibited. And then, and the punishment proposed is very, very lenient, because whoever manufactures, exhibits, sells for sale the prohibited endosulfan pesticide under this act shall be liable to be punished with imprisonment of 6 months, which may extend to 2 years, or to pay a fine of not less than rupees 25,000, which may extend to 2 lakhs rupees, or with both. This is very, very meager, and this lesser punishment has been now contemplated. I am of the opinion, though the death penalty is opposed by everywhere, including myself, I am opposing the death penalty personally. But this kind of death is caused, this kind of damage, injury to the body and the mind of the innocent persons, those who are living in and around, and those who are doing the agricultural operations or
work, nature of work, agriculture works, they are sufferers. They are no way responsible for this kind of activity, because the multinational corporations or our own Indian companies, without any social responsibility, they have manufactured and sold the killer pesticide and thereby killing the innocent people. So the manufacturing, selling, storing must be punishable with a life imprisonment and also heavy fine. And further, because of this use of prohibited endosulfan, if any death occurs or any injury or any kind of damage occurs, then definitely death penalty must be imposed with a heavy fine. And the fine, if it is imposed, it must be recovered and it must be paid to the victims. So in such a manner, these two provisions or the clauses must be corrected or amended. So, and also, my good friend Raju, at the beginning itself, he has mentioned that a case is pending. Initially, temporary ban was imposed by the Honorable Supreme Court. Now, I do not know the details of the case and what is the stage of the case. So, and also, we have to look into that Supreme Court judgment, whether the case was over, what is the result of the judgment, or still it is pending. So, it is a very, very important piece of legislation as a private bill. Now my friend Raju has moved this. So the as my another brother rightly mentioned the name of Mr. Dr. Nammalwar. He is a pioneer in organic farming, agricultural activities in Tamil Nadu. And also in Maharashtra also one gentleman, I am not able to recollect his name. He also introduced the zero budget farming. Zero budget farming. So this kind of process of agriculture can be employed instead of resorting to these chemicals which is killing the innocent agricultural workers and agriculturists. So the Dr. Nammalwar has introduced a very good system of agriculture or the process of doing the agriculture, and also a gentleman from Maharashtra has also introduced this zero budget agriculture. These kind of processes must be encouraged by the government, and the manufacturing, selling, and because of the illegal use of that endosulfan, if any death occurs or any injury causes, it must be the persons, those who are responsible, must be imposed with the death penalty with a heavy fine. And also we can easily remember the Bhopal gas tragedy. In that case, even the Supreme Court at one point of time agreed to withdraw the criminal case after receiving the compensation, and then fortunately it was reopened, and the portion of the judgment of the Supreme Court itself was set aside, namely relating to the criminal case regarding the compromise of the criminal case, because it cannot be compromised, it cannot be compounded. So still subject to correction, I am of the view that the victims of the Bhopal gas tragedy still suffering. Rehabilitation work is not making any progress. The victims are not getting any real benefits, and they are still sufferers. So the illegal use of killer pesticide, namely endosulfan, must be banned, and also, as I earlier submitted, the case pending before the Supreme Court also to be looked into, and this august body may accept this bill moved by my brother Raju, and the innocent farmers, agriculture workers, and the residents of the locality may be saved. And then further only one minute. Tribunal can be constituted. Maiden speech. Tribunal can be constituted
the tribunal award, Considered as a major. no. It The cannot be considered as. delay in court is well-known fact, everybody knows it. The tribunal after passing the award, it must be executed. So execution of any degree or award is not an easy matter. So we must have a separate provision for execution, like on the lines of the Consumer Forum under the provisions of the Consumer Protection Act. I thank the chairman and also I thank Rajiv ji. Thank you. Thank you very much. Mr. Tripathi.